Yeah, good evening, everybody. Welcome to the session. आप सभी का स्वागत है and we'll start our session which is post market review. So, day trader, great to see you on a regular basis. You should be others should get inspired by you. Is it are the sessions helping you? That's great to know. Yeah. So today, what we saw in the pre-opening session was after a strong move up like yesterday, it's quite obvious that market stalls for a day or two, and it's nothing. That's how markets are. It needs some, see, a strong move. Market does take a pause or a breather. So as a trader, you should be aware of it. The pause and the breathers do come on a regular basis. Right. So I'll just wait for a minute and let's start. Oh, you said today is awesome. That's great. Right. Yeah, before we start the session, I'll read out the disclaimer. This is for educational and informational purpose only and does not constitute financial advice. So that's the plan for our day. And let's see from where we got a plan. What was a data point from the price charts or the what we call price action? Options का क्या data हमने use किया? And this is how, as a trader, अगर आपका extreme short term time frame horizon है day or two, like these sessions, what we are doing is to give you a clarity in terms of आज क्या होगा या कल क्या होगा for a day or two. So let's start. So I'll go to my Stocko Incred Money platform, and from there I'll go to my trading view. So the trading view charts are opening. So first let's go to Nifty. See, Nifty में हम लोग जो देख रहे थे, the upswing was likely to get extended, वो extend हुआ भी. But remember in the morning we said there's a gap over here. और ये गैप के पास ही 25,800 में heavy call writing था आज की expiry का. So that's why market did pause, stall, or again taking a breather at the same level. Okay. So now this gap has been filled. ये gap पूरा ही भर गया, which tells us that the resistance has shifted a shade higher, which is again, I would call it somewhere around 25,900 or 800. वो band intact है. And always remember, जब market swing रहता है ना, so the first stop for the swing is 50 to 62%. I'll just change the settings. वो एक retracement level. So today we did a 62% retracement level. So this was also playing on my mind. And 62% retracement, gap fill plus 25,800 ka heavy call ka OI was good enough indication that for today, at least on the 17th of February, that's likely to be the high for the markets, which we have been achieved. So from here on, the resistance is still the same. When I say still the same, this gap candle till this entire candle is not taken out, market will push higher, may push higher inside it, but it will stall somewhere here. So going forward, that's your resistance 25.8 to 25.9. And now we'll trace out बहुत एक compact या narrow range में trade करेंगे. Why? Because sometimes what happens is क्या होता है ना, to support or resistance, buyers or sellers, demand or supply are very close to the current price. मतलब सप्लाई भी 200 पॉइंट ऊपर है, डिमांड भी 200 पॉइंट ऊपर है, रेजिस्टेंस भी 200 पॉइंट ऊपर है, सपोर्ट भी 200 पॉइंट ऊपर है. वी आर इनटू दैट स्टेज ऑफ द मार्केट्स. So if you remember morning session, we said don't take this low as a support, take this entire. So I need to change this color to something bullish. Yeah, let it be that way. तो अगर आप आज देखो तो निफ्टी just took support over here. Did anybody realize this? Yes or no? It opened down, gap down, touched this level and went up. So abhi for a day or two, let's get focused on 25.9 on the upside and I would say 25.5 on the downside.
So this is going to be your immediate trading range. Right? So yeah, as the support and resistance are both close to nearby. And always be aware of when your prices are running across the Bollinger Bands. अभी क्या 20 DMA बार बार प्ले में आता रहेगा, right? Any dips declines, unlike if it's not crossing this high, वापस is 20 DMA. So right now we are into the upper end of the Bollinger Band range, which is 20 DMA का support लेके resistance plus the uh, upper Bollinger Band, which is at 26,100. So that's too far for a day or two. At least keep this in mind. 25.5 the support and 25.8 to 9 is the resistance. So now let me go to my Insta options platform and just check the monthly expiry data for Nifty. So OI statistics आज का तो expiry हो गया. So let's go to 24th. On the 24th, अगर आप बहुत बड़े टावर्स देखते हो कि OI buildup का, the big towers to me from the current price is 26,000 on the upside. On the call side, call में आज की तारीख में 89.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के कॉल का OI है, which is huge at 26,000. So that's going to be a resistance going forward, I would consider throughout the week. But in between this, there is a OI buildup of 44.35 lakhs in 25,800. So 800 to 850 or 900 is quite decent levels on the upside, which market should go and test it based on the OI. 26 will remain the strong resistance as of today. ऑन द डाउन साइड अगर मंथली एक्सपायरी हम देखते हैं फेब्रुवरी सीरीज की, तो पुट साइड में 75.52 लाख, सॉरी 75.22 लैक्स, मतलब 75,22,000 का ओआई बिल्डअप है पुट में, सो विच इज 25,500. तो अगर कॉल पुट का टोटल ओआई डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं, जो कि मैक्सिमम कौन से स्ट्राइक में आसपास है, एक रेफरेंस पॉइंट मिलता मिडवे रेंज रहता एटीएम. So 25,500 is a support from the OI point of view, and extreme resistance is 26,000. So in between this, plan out your trades. So that's what I have written in our plan, which is dated 17th Feb. So the trend for the Nifty still I would consider is a pullback, and pullback can extend. It can extend another 100 points or 200 points. Chart pattern, today's candle is bullish just because it's a green candle and the body was big. रेजिस्टेंस हमने देखा 25,900 का रेजिस्टेंस आ रहा है, विच इज अ क्वाइट स्ट्रॉन्ग वन. और सपोर्ट मैंने गलती से 52 लिख दिया, 25,500 का सपोर्ट होगा, पार्डन मी फॉर दैट. 25,500 हम सपोर्ट कहां से निकाल रहे, बेस्ड ऑन बोथ व्हाट वी कॉल ओआई डेटा प्लस द मिडिल बोलिंगर बैंड. टेक्निकल स्टडी अभी भी 20 डीएम है, विच इज द मिडिल बोलिंगर बैंड. प्राइस अभी भी उसको क्रिस क्रॉस कर रहे हैं. So that will stay into focus. That will stay into focus. Right? OI buildup हमने भी देखा 25,800 और 25,500 का पुट और 25,800 का कॉल. ये दो में OI buildup है जो कि नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी है. जहां पे OI buildup होता है ना, वो रेजिस्टेंस बन जाता है टिल इट्स नॉट क्रॉस. एक बार निकल गया देन देयर इज अ शॉर्ट कवरिंग. और क्यूमुलेटिव OI है 0.98, which says that there is more build up in, let me show you when we say, so there is more build up in call than it put. So market call side में heavy है, but इतना भी heavy नहीं है. Difference is very very narrow, 10.12 CR and 9.8 CR. So PCR is around that levels. Right? What we have written down is at 0.98. अभी straddle price देखें 24 तारीख एक्सपायरी का, तो 307 का straddle price है. So 307 straddle price is quite a big range from the current levels. So दिखा रहा है कि वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी या ज्यादा घटपड़ की काफी गुंजाइश है. So straddle price does suggest that यहाँ से आप 200-300 पॉइंट का मूव अप या डाउन लेके चलो. कमेंट्रीज गैप का रेजिस्टेंस टेस्ट किया, बट वी हैव टेस्टेड द गैप रेजिस्टेंस, बट फिर भी कोई करेक्टिव डिक्लाइन या एक पॉज होल्ड ब्रीदर का इंडिकेशन नहीं मिल रहा. व्हाई? बिकॉज द कलर ऑफ द कैंडल वाज ग्रीन
and the body of the candle was big, so we can call it as a continuation. जो कल का जो rise था, आज का जो rise है वो continuation में चला है. So I have a question from Pushpendra Kumar. Sir, please start your views on Sensex also. I'll take, yeah, definitely we'll try to do that, sir. Let me try to change the format, okay? So now let's go to Bank Nifty. अभी हम Bank Nifty की तरफ जाते हैं. Again, I'll use my platform, which is Stocko Incred Money Trading View. It's a fantastic platform. I'll go to Nifty Bank. तो निफ्टी बैंक है, बोलिंगर बैंड्स में हटा नहीं रहा हूं. अभी जो आपका है जो वॉलेटिलिटी है वो मिडिल और अपर बैंड की है. इफ यू रिमेम्बर इन द मॉर्निंग सेशंस वी सेड दैट ये जो ओपन है ना वहां तक एक बार मार्केट को जाने दो, which is 61,500. So today's move is an extension of yesterday's rally, in which आज की कैंडल हमें कंटिन्यूएशन कैंडल बोलते हैं. कंटिन्यूएशन बुलिश बोलेंगे. Why? Because yesterday's green candle, today's green candle, it just followed the yesterday's candle, and the body is green, or green body में it has closed at the highest point of the day. That's why we're calling it a bullish candle. और ऑन द अपसाइड अगर बैंक निफ्टी में देखते हैं तो अपर बोलिंगर बैंड 61,500 एंड वो ट्रम्प का न्यूज, द टैरिफ न्यूज ओपनिंग वाज 61,400. तो ये रेजिस्टेंस रहेगा. डोंट इग्नोर दिस, ओके? सो एंड द सपोर्ट साइड विल बी, इफ यू रिमेंबर बैंक निफ्टी में आज मॉर्निंग में हमने क्या बोला था, ये जो बॉडी है इसको आप सपोर्ट ले लो. कैन एनीबडी रिमेंबर इन द मॉर्निंग? So it opened down, dipped here and rallied. So we are now not going to change this. Entire is the support for the volatility. Rated trader, you remember? Yeah. So that's how even Bank Nifty is positioned. See, the range is very narrow. It is very compact. In between, जो intra week हम बोलते हैं, swing चल रही है. एक दो दिन ऊपर, एक दो दिन नीचे. This is likely to continue, and the swing can extend for 3 to 5 days. Right? But ओवरहेड रेजिस्टेंस का आप ध्यान रखो. सो ऑन द व्हाट वी जस्ट नाउ सॉ ऑन द चार्ट, वही मैंने अपने ट्रेड प्लान में लिखा आपके लिए. द डेली इज अपस्विंग है. व्हाई अपस्विंग? बिकॉज बैंक निफ्टी ने लास्ट लो नहीं तोड़ा. दैट मींस द ट्रेंड एज पर माय डाउ थ्योरी इज अप. चार्ट पैटर्न इज अ बुलिश कंटिन्यूएशन. रेजिस्टेंस 61,400 अराउंड द अपर बोलिंगर बैंड का आ रहा है. सपोर्ट 60,600 का आ रहा. ये मैंने ओआई डेटा से भी थोड़ा मैच किया. जो टेक्निकल स्टडी आपको भी फॉलो करनी है वो बोलिंगर बैंड है, बिकॉज हर 3-4 दिन में मार्केट रैली देता, ओवरबॉट हो जाता, ओवरबॉट से डिप्स डाउन टिल वेयर द 20 DMA. सो ऑल वी आर डूइंग इज whipsawing at or around the 20 DMA and then giving a swing above the 20 DMA, and this pattern is likely to continue. So कभी कभी क्या होता है, all studies are not relevant at a particular point of time. Right now the most study which is most relevant is just support resistance और आपके Bollinger Bands plot करो आप. Now let me take you to the OI build up part जो हमने discuss किया निफ्टी का. Same, let's go to our Stocko Incred Money Insta options and I'll go to Bank Nifty. So I go to OI statistics. And in that Bank Nifty 24 तारीख की जो मंथली एक्सपायरी है, दिस इज द करंट 61,100 आपका एटीएम है. तो भी आप बैंक निफ्टी में देखिए तो कॉल में ओआई इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एट 61 to 61.3. ये छोटे छोटे जो टावर्स है इसका इतना बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं आएगा. हमें बड़े टावर्स देखना है एज अ रेजिस्टेंस. फाइन, ये इंट्राडे में हिट भी कर सकते, क्रॉस भी कर सकते बेस्ड ऑन प्राइस ब्रेकआउट और प्राइस मूवमेंट और प्राइस मोमेंटम. OI point of view से I'll focus on this green big tower which is at 61,500, जो कि आज की रेट से 360 पॉइंट ऊपर है. So that's going to be my resistance from the OI point of view. If it crossed, then further move up. So यहाँ से एक खुला मैदान है यहाँ तक का. On the put side, if you see 61,000 is a very crucial level. ध्यान में रखो 61 तोड़ता है, थोड़ा नरमी आ सकता है 200-300 पॉइंट का, और 61 is going to be a momentum line. ये चीज का आपको ध्यान रखना है. फाइन, एंड फिर 60-500 पे बहुत बड़ा पुट में ओआई बिल्डअप है. सो दैट्स हाउ द ओआई बिल्डअप इज. एंड द पीसीआर अगर बैंक निफ्टी का हम देखते हैं तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स में देख लो, देयर इज मोर ओआई इन पुट देन इन कॉल. पुट में अगर हम देखते हैं तो 1.87 crores का ओआई है, विच इज क्वाइट बिग.
compared to the call 1.47 crores. Sorry, 1.45 crores. So अगर आप टावर देखे, रेड टावर says move OI build up in puts which acts as a cushion on the downside. आज भी जब इंट्रा डिप आया, right, it found support at the 60 minutes levels and we saw decent rally today. Why? Because जब आप देखते हो पुट साइड ह्यूज ओपन इंटरेस्ट रहता है ना, तो इंट्राडे डिप्स पे वो स्ट्राइक्स पे एक सपोर्टिव प्राइस सपोर्टिव मिलता है मार्केट्स को ऑन इंट्राडे डिप्स और डिक्लाइन. सो जस्ट हैव टू बी अवेयर ऑफ इट. एंड वॉट एवर वी डू, यू सी, एज आई से एज अ डे ट्रेडर, और आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हो, आपको क्या, आपको स्पॉट प्राइस चार्ट्स, प्राइस एक्शन और ओआई डाटा को कंबाइन करना है. सो अगर पीसीआर देखते हैं, so the PCR is 1.36. So there is more build up in put side as compared to call side. So dips may support a market go. And on the OI chain side, to see the straddle price at the money call put, which shows us that the volatility part or the move part or the swings part of the markets. तो 1.36 का पीसीआर है बैंक निफ्टी में, पुट साइड में हैवी ओआई बिल्डअप है, इसलिए आज भी जब डिप आया था एक सपोर्ट आया था पुट का. स्ट्रैडल प्राइस बैंक निफ्टी विच इज एट द मनी कॉल और पुट का टोटल मारो आप तो 780 रुपया, इट 780 पॉइंट्स. व्हाट डज इट सजेस्ट? वॉलेटिलिटी रहेगी, फाइन, विच मींस 400 पॉइंट 300 पॉइंट का गड़बड़ ऊपर नीचे, दैट विल बी देयर. सो यू आर इन अ अपस्विंग विद द वॉलेटिलिटी, and I would say upswing is continuous till we don't get any sign of it. Okay, so that's for Nifty and Bank Nifty. अभी थोड़ा गोल्ड की तरफ जाते हैं. For gold I'll go to the trading view, but ऊपर में resistance है, okay, at a upper band और further upswing market में एक resistance आ जा रहा है. तो 20 डे में से जो स्पाइक्स नीचे स्पाइक्स आ रहे हैं नीचे, that is finding resistance at or around the upper Bollinger Band. Keep that in mind, fine. Otherwise बहुत बार होते तेजी में हम भूल जाते कि resistance भी है. So that keep you in mind. Keep that on mind. So gold देखते futures MCX पे. गोल्ड जैसे हम रेगुलर देख भी रहे अभी कि गोल्ड में एक कंसोलिडेशन चल रहा है, फाइन. सो लेट मी रिमूव दिस. सो मैंने कुछ भी मार्किंग चेंज नहीं किया गोल्ड का. इफ एनीबडी कैन रिमेंबर दिस, ये 50 to 62% रिट्रेसमेंट है. सो गोल्ड इज एट अ सपोर्ट, फाइन. अभी गोल्ड को यहाँ से बड़ा मूव आने के लिए इतने कॉम्पैक्ट रेंज में इट बिकम्स वेरी टफ टू ट्रेड. या एज अ डे ट्रेडर हमारी जो स्ट्रेटेजीज है, हाउ टू ट्रेड कमोडिटीज ऑन द मोमेंटम एज अ डे ट्रेडर फॉर स्कैल्पिंग, आप यूज कर सकते. यू कैन गो टू अ यूट्यूब साइट एंड यू कैन सी इन द वीडियो सेक्शंस, फाइन. But view-based trading, swing trading, right now, gold is in a very, very compact range. 160 और 152 के बीच में ही है. और नीचे में सपोर्ट ले रहा, इट्स स्पाइकिंग अप. विच साइड इट ब्रेक्स, उसके ऊपर से एक डायरेक्शन आएगा, भाई. और तब तक आप इंट्राडे इसमें करते रहो. So the support level for gold is 1,52,200 to 1,48,000. Upside is 158. और गोल्ड में अगर 60 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हम चले जाते हैं, तो अगर आप देखिए 60 मिनट्स का लो, एक बार आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन बैंड और बहुत नैरो रेंज दिखती है, आपको लगता है कि नहीं बहुत बड़ी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो आपको 60 मिनट पे जाना है. अगर 60 मिनट पे हम जाते हैं तो ये सपोर्ट एक बार गोल्ड टेस्ट कर चुका है. गेटिंग माय पॉइंट. यहाँ से एक बाउंस आया, वापस से यहाँ आया, एंड रेजिस्टेंस में इतने ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा. सो गोल्ड इज लाइकली टू बी बिटवीन 1,50,652 टू 1,54,000. और भी आपको कॉम्पैक्ट करना है तो गो टू अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, फाइन. सो आई वुड स्टिक टू 60 फॉर अ व्यू बेस्ड ऑन प्राइस डेटा. सो दैट्स हाउ गोल्ड इज लुकिंग लाइक. So अगर मैं वापस से अगर प्लान करता हूँ तो दिस इज गोइंग टू बी अ प्लान बेस्ड ऑन what how we have interpreted the data both from the cash market as well as from the options market, and that's how market is looking like. Okay, so that's all from my side today, friends. कल फिर मिलते हैं सवेरे 8:45 पे for pre-market opening sessions. I'll be there. Make sure you are there. So these sessions are there to give you the clarity in terms of how to make a plan, how to interpret the data, how to use the stock or incred money in a very, very professional manner. Okay. So thanks. Have a nice day, everybody. We'll meet again tomorrow. And
आज हमारा एक सेशन है from 4:30 to 5:30. It's on debit strategies, which is a bull call spread and a bear put spread. If anybody is wants to learn about debit spreads, which is hedge strategy on the directional view part of the market, आप stocko.in website पे जाके you can register. It will start dot at 4:30. So that's all, friends. Thanks. Have a nice day.